Subscribe Canadian Vlogger 63 and don't forget to press this bell icon to get all information about international students, visa updates and much more which you need. Hi, welcome viewers की हाल चाल है जी. I hope everything is hunky dory. Full funded scholarship in Canada by University of Alberta. University of Alberta offering an amazing opportunity to study master's degree, PhD degree, bachelor degree, diploma, certificate in Canada. This is full funded scholarship for international students across the world. Alberta University is a premier university and public research based university, and more than 200 undergraduate programs, more than 500 graduate programs, 250 specializations and 300 research areas are in University of Alberta. You can apply for the scholarship individually and can submit online applications. Applicants should contact the department while trying to apply for admission in this university. यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा कनाडा की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में गिनी जाती है और इसकी अगर रैंक की बात करें तो ये टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ इन कनाडा में ये रैंक करती है गाइस. और मोर देन 7,600 प्लस ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अल्बर्टा में स्टडी कर रहे हैं और 34% स्टूडेंट्स फ्रॉम द कंट्री आर प्लेइंग अ रोल इन रिसर्च कंपनीज इन कनाडा. यानी कि 34% स्टूडेंट्स जो यहाँ के हैं वो किसी कंपनीज में रिसर्च बेस पे काम कर रहे हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है और ये बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में गिनी जाती है कनाडा में. और अल्बर्टा ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा प्रोविंस है. स्पेशली मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि वहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए. ऑन्टारियो ऑब्वियसली बहुत फुल हो चुका है, यानी कि रश बहुत लग चुका है. बहुत से इमिग्रेंट्स और स्टूडेंट्स उसी को ही प्रेफर करते हैं, कहीं और जाते ही नहीं हैं. वो समझते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं. बिल्कुल ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन जो बाकी प्रोविंस हैं वहाँ पे भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वहाँ पे PR के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. बात करें अगर जॉब पर्सपेक्टिव के लिहाज से तो अल्बर्टा में बहुत अच्छी जॉब अवेलेबल्स हैं. स्पेशली अगर IT इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो बहुत वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं IT रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए. और रश वहाँ पे कम है तो ऑब्वियसली आपको जल्दी परमानेंट रेजिडेंसी भी मिल जाती है गाइस. As I told before, this university falls in top 5 universities in Canada, and Canada obviously giving permanent residency to student after 2 years of master's degree. You can easily get a work permit of 3 years after graduating. Then you can apply for PR very easily. So in this video I will tell you that which programs are available for these scholarships, what types of scholarships offering by University of Alberta, deadline of the scholarship and requirement for this scholarship, and I will give you the link of official website of Alberta University where you can apply for or contact to the department for this scholarship as well. So before I start this video further, please subscribe my channel and press the bell icon as well and never miss any update this kind of information in future. So let's get started. Here we go. Okay guys, if you cannot understand Urdu Hindi language, I have given the blog link in description and written all the information, all the details that I'm going to speak in this video. So go through the blog link. And guys, you do not need English IELTS language certificate. I'm not joking, and it's not a joke. If you are from English speaking countries, then you don't need IELTS certificate at all. You just need English proficiency certificate from your last university or college, then you are completely eligible for these scholarships. And if you are non-English speaking countries, then obviously you need IELTS certificate guys, and it is must for these scholarships. Okay, अब इसमें कौन कौन से programs offer किए जाते हैं scholarships के लिए. So these are the programs, and these programs are eligible for the scholarships in Alberta. Agriculture and Life Environmental Science, Alberta School of Business, Fine and Arts and Humanities, Science, Social Science, Education and Engineering, Law, Medicine and Dentistry, Native Studies, Nursing, Pharmacy, Public Health, Rehabilitation Medicine, IT Industries, etc. So these are the courses where you can apply for the scholarships guys. Now the most important thing, or what are the scholarships offering by University of Alberta? There are numerous scholarships in University of Alberta which are awarded to outstanding applicants, are funded by a variety of sources
including the government of Canada, government of Alberta, and many donors of the universities. Some awards are exclusive to specific programs. So these are the scholarships list where you can apply for this scholarship. आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा scholarships के नेम्स है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं. मेक श्योर जो प्राइवेट स्कॉलरशिप्स हैं उनसे आप दूर रहें, क्योंकि अगर आप प्राइवेट स्कॉलरशिप्स लेते हैं तो आपको PR नहीं मिलेगी. ये PR की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है गाइस. अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर वो स्कॉलरशिप प्राइवेट नहीं होनी चाहिए, वो बल्कि गवर्नमेंट की होनी चाहिए, फंडेड होनी चाहिए. So you have to make sure before you apply for this scholarship, guys. Now I'll tell you about details about this scholarship. University of Alberta offering the scholarship degree level, bachelor's, master's, PhD, diploma, certificate program are eligible for the scholarship. Financial coverage is full funded guys. Everything is included. And deadline is 1st November 2020, March 1st 2021, May 21st 2021. यानी कि अगर आप इसी साल में नवंबर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी नवंबर 1st डेट है, लास्ट डेट है इसके अप्लाई करने के लिए. और अगर आप नेक्स्ट इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मार्च 1st है. और अगर आप मे इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो May 1st 2021 इज़ द लास्ट डेट फॉर दिस स्कॉलरशिप गाइस. If we talk about who can apply for this scholarship, Canadian citizen eligible for this scholarship as well as international students can apply for this scholarship. So what are the requirements? First of all, you must have a strong academic background, guys. You need a good resume and cover letter, and you need IELTS certificate if you are from non-English speaking countries. And if you are from English speaking country, then you just need a English proficiency certificate. That's all the information, guys. Now how to apply for this scholarship? As I say in every video, it doesn't matter where you apply for the scholarship, in which university you apply for, just visit their डिपार्टमेंट गाइस. आपको उनकी डिपार्टमेंट विजिट करने हैं, वहीं पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. अगर आप ब्लॉग पोस्ट में लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे एक लिंक दी हुई है ऑफिशियल साइट की. जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा की ऑफिशियल साइट है जहाँ पे आप डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे कंप्लीट डिटेल्स ले सकते हैं गाइस. ओके, सो हाउ यू कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप, और यू कैन से द कोर्स रिलेटेड स्कॉलरशिप. First of all, you have to click on this link, then you have to contact the department. Here you have to select your desired course in which you want to study. Okay, now you have to select these options, scholarships or award. After selecting this option, you have to choose your desired scholarships. There are numerous scholarships offered by University of Alberta, and it depends on program to program. You have to select your program and then you have to select your scholarship, and you have to see the eligibility criteria, all the stuff like that, and then you have to apply for it. That's all. So that was all information, guys. Please share this information with others as well. So that's all. I think I've covered everything. If you want to get some information or any query, just comment down, send me mail, and must follow me on Instagram. For fast reply, follow me on Instagram. And guys, don't forget to subscribe my channel and must share every information with others.